This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. Namaste and welcome to another episode of Decoding Victory. My guest today is not a leader or a highly accomplished professional from a specific field, but she has emerged victorious in what matters most, that is life. Please join me in welcoming Dhara Mehta Shah. She is joining us from Dallas, Texas, and she has won many battles in life. I would like to introduce you to Dhara, and here is a great opportunity for all of you to interact with her. So I thank all the audience members to join us today and kindly send your messages to us. Welcoming Dhara to our program. Hi. Hi, Dhara. How are you, Dhara? Good. How are you? Oh, I'm great. Thank you. And I'm sorry, I said your name slightly wrong in the beginning. It's Yeah, such a beautiful name, Dhara. And how are you doing this morning? it's good. I'm super excited. Oh, we are excited too to have you here on our program. You are an amazing person, amazing woman. Anybody that have sent the flyer to about today's program, and sent a little bit information about you, they've all said, hats off to you, amazing woman, so much inspiration. I will send you messages after our program, but I'm sure our audience members will be sending a lot of messages for you, Dhara. Thank you. Thank you. All right. So, Dhara's journey has been an incredible one, completely like an unbelievable journey you've had, Dhara. And I would like to, in a way, introduce you to the members who are new through a small video that you've made yourself and you've posted on your YouTube channel. So, if you're okay with it, I'm going to start off with that introduction. Yes, sure. Okay, perfect. So, audience members, I'm going to show you a video. कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल गम मुसाफिर था जाने दे धूप आंगन में आने दे जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल
सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे उंगलियों से कल की रेत बहने दे आज और अभी में खुद को रहने दे कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल एक टुकड़ा हंसी चख ले एक डली जिंदगी रख ले जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल हिचकी रुक जाने दे सिसकी थम जाने दे इस पल की ये गुजारिश है मरना क्यों जी लेना बूंदों को पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है पानियों को रास्ते तू बनाने दे रोशनी के पीछे खुद को जाने दे कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल Dhara, I apologize because of the internet. I think a little bit the video had some glitches. It was a little slow in between and some interruptions. But what an incredible journey, Dhara. What an incredible journey. I did not see anything other than smile on your face throughout what you went through. And that is what was bringing a smile to my face. Although I was seeing those pictures where you were in the hospital,
on the bed, needing completely dependent on others, even to walk or get up. But one thing that was constant was your smile on your beautiful face. And that is amazing to me. That is amazing. Hats off to you, Dhara. Hats off to you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you for making that video for us. So, what we'll do now is I know there are a lot of audience members who are eagerly waiting to speak to you as well. They are sending us messages. I have been trying to show them on screen. So, here is my thought. Let us begin with your journey from the beginning. Can you tell us a little bit more about where you are from originally, where you grew up, and any fond childhood memories that you want to share with us? Yes, so I'm from Gujarat, India, and my city name was like Savarkundla. And in my family, my mom, dad, my grandma, we are four siblings. So we like it's too much fun. And मेरी स्कूलिंग वहाँ पे ही मैंने की है सावरकुंडला में कॉलेज सावरकुंडला में so I complete my study in Savarkundla, and then when I 22 years old, so like Siddharth's family and my family, it's family friends. So in 2012, we just uh, first time हम दोनों मिले and हम दोनों को लगा कि हाँ हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो then we got married and then 2013 में I came to USA. Lovely, lovely to hear that. So, when you came here to USA, what was your first impression about life here and life in India that you were familiar with at that point? How did you feel? So when I came to USA, first time मैं इंडिया से बाहर आई थी so I'm super excited, I'm happy and first time मैं फ्लाइट में आई so मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी एंड मैं जब यहाँ पे आई तो लाइक एवरीथिंग इज डिफरेंट बिकॉज big house, big cars, big roads, and obviously new हम नई नई शादी हुई थी तो वो भी एक एक्साइटमेंट था कि हाँ अब शादी के बाद एंजॉय करने वाले हैं तो यूएसए भी बहुत हम लोग घूमे तो मैं बहुत हैप्पी थी एंड obviously India like our family there but like here is like घूमने का बहुत अच्छा है यहाँ पे तो यहाँ पे भी हम लोग फन करते हैं तो दोनों साइड डिफरेंट है so yes. Right. So you liked what you were seeing in the US. It was very different from what you knew in India, but you also saw that there are more opportunities to travel here. Beautiful city, beautiful country, right? Yeah, wonderful. So did you make friends right away here when you came? यस सिद्धार्थ का बहुत बड़ा ग्रुप था मैं आई तब और अभी तो बहुत बड़ा हो गया है तो हमारे फ्रेंड्स सब भी बहुत अच्छे हैं सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है मेरी जर्नी में सो Lovely. वी आर लकी इस लाइक ये हमारे फ्रेंड्स हैं. And I honestly feel that your friends feel equally lucky, if not more, to have you in their circle. And Dhara's friends, if you are watching the show, you have to message us and let us know what you love about Dhara, because I have a lot of points that I'm going to.
Because I am seeing good messages coming from even people who know you just now, you know. So, Dhara's friends, I welcome you to send messages. Tell us, share with us what you admire about Dhara. How is Dhara like? Let us know more about Dhara. Okay, so throughout this program, we would encourage everyone to keep sending messages. All right, Dara, thank you for sharing that. So you had a great beginning in back when you came here to the United States. And at this point, I would like to show another small video clip that you have made and you have posted on your YouTube video, on your YouTube channel, which I think would give a little bit more idea about the journey from there, how it went. Okay. Sure. All right. And audience members, please bear with us if there is a little bit of slowness in between. But, this is a very important part of her journey. And this is in Hindi. However, right after the video, we will give a short description of what happened. So please watch. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धरा शाह है। मैं डेलस यूएसए में रहती हूँ। वैसे मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपको अपनी एक कहानी बताना आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। आपने सुना ही होगा कि कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है जो हमने कभी भी प्लान नहीं किया होता, जो हमने सोचा भी नहीं होता। तो मेरी कहानी शुरू होती है मेरी प्रेगनेंसी के साथ। 2013 में मैं शादी करके अपने हस्बैंड के साथ यूएस आई। मेरे हस्बैंड का नाम सिद्धार्थ है। हमारी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी और हर कपल की तरह हमने भी बेबी प्लान किया। 2018 में मैं प्रेग्नेंट हुई। हमारे घर पे खुशी आने वाली थी, तो हमारे दोनों साइड की फैमिली बहुत ही खुश थी। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं था। मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी रही, यहाँ तक कि मैं 8वें और 9वें महीने तक भी पूरा काम कर सकती थी। मैं फरवरी 2019 में डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई। मैं हॉस्पिटल में गई थी अपने 2 हाथ और 2 पैर लेके, पर मैं वापस आई अपना आधा अंगूठा लेके। हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चे को लेने के लिए, मेरे बेबी का वेलकम करने के लिए गई थी। मैं घर पे उसके लिए खिलौने, कपड़े, उसके लिए झूला, सब कुछ रेडी करके गई थी। हम भी इतने खुश थे कि हाँ, फाइनली घर पे एक बच्चा आने वाला है, खुशी आने वाली है। हाँ, मैं हॉस्पिटल में 2 महीने तक डिलीवरी के लिए, 2 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। 2 महीने के बाद मैं 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 2 महीने के बाद
हॉस्पिटल में एडमिट हुई। फिर अराउंड 27 घंटे से भी ज़्यादा मेरी लेबर डिलीवरी की प्रोसेस चली। और बहुत टाइम पुश करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि बेबी का हेड स्टक हो चुका है, तो हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। फिर हमें ऑपरेशन थिएटर भी नहीं मिल रहा था, तो बहुत वेट करने के बाद अराउंड रात को 2 बजे हमें ऑपरेशन थिएटर मिला और मेरा सी सेक्शन हुआ। सी सेक्शन होने के बाद मैंने बहुत ही अच्छा प्यारा से एक बेटे को जन्म दिया। और फिर सब इतने खुश थे, मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम सब वहां पे थे, तो वो भी इतने खुश थे बच्चे को देख के। मैंने बस अपने बच्चे को देखा ही था कि मैं तुरंत बेहोश हो गई। फिर बाद में मुझे पता चला कि मुझे हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। नर्स ने बिना डॉक्टर के ही मेरी ब्लीडिंग जो हो रही थी वो मैनेज करने की ट्राई करी। और फिर जब डॉक्टर आए तब बहुत टाइम भी निकल चुका था और बहुत ब्लीडिंग भी हो गई थी। तो फिर मुझे वापस ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में मेरे दोनों ओवरीज निकाल लिए गए, पार्शियल यूट्रस भी निकाला गया और हेवी ब्लड लॉस की वजह से मेरा हार्ट बंद हो चुका था। अराउंड 1.5 घंटे तक उन लोगों ने सीपीआर किया। सीपीआर के बाद मेरा हार्ट तो स्टार्ट हुआ, पर मैं कोमा में चली गई। मेरे लंग्स में भी पानी भर गया था, तो उन लोगों ने वो भी निकाला। फिर मुझे ट्रॉमा आईसीयू में एडमिट किया गया और बाहर आकर मेरी फैमिली को बताया गया कि अराउंड 5% ही चांस है इसके बचने के लिए। मुझे डायलिसिस पर भी रख दिया गया। हेवी ब्लड लॉस की वजह से मुझे अराउंड 100 और मे बी उससे ज्यादा ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स दिए गए। शायद हाथों में ज्यादा ब्लड प्रोडक्ट्स देने की वजह से रात को ही मेरा पूरा हाथ सूज गया था, मेरा राइट हैंड, और फेशियोटोमी करना पड़ा। फेशियोटोमी में हाथ में डीप कट कर
Dhara, we had to end the video because of the lag that was happening, but all of us heard what you went through so far. And just for our viewers who could not understand Hindi, just wanted to quickly mention that Dhara and her husband had a beautiful baby boy, Mahir, and soon after, complications happened to her health, and her health went spiraling down. And there was severe blood loss, and followed by a coma that she went into for a few days. And then, because of the heavy medications that she was given, unfortunately, Dhara's limbs had to be amputated, her legs. And fingers, and so she is has gone through a lot in the hospital. And let us now talk to Dhara and find out how she went through all this. Dhara, this is something that is completely unbelievable for somebody like me who's just watching a video. It is not possible to even imagine what you went through. So, still, you're like, as I mentioned, even those painful situations, you talk about it with so much grace, so much, clarity, and even still with a smile. So, Dhara, can you please tell us how you faced all this? Um, right after delivery, you had a baby, but you couldn't hold the baby. You went through so much. As you were explaining yourself, all the details, the vivid details, where they had to do emergency surgery on you, and then you went in coma, and then after the coma also you had to go through so much of treatment and therapy, even to be able to be alive and be with us today, right? So every time that you had some consciousness, right, there may have been times when you yourself could not believe the condition that you were in, and yet you kept fighting. How did you do this, Dhara? What was going on in your mind? What were your thoughts? Please share with us if you don't mind. Yes. So my job, when I go like hospital, because like this is movement for a special like mother, so like मैं बहुत खुश थी that time. And we go like hospital, it's like medical city Plano hospital. And we like हम जब गए बेबी का वेलकम करना था, and suddenly like my life just in like 1 second, like it's different. So yeah, and then डॉक्टर ने आके बोला कि सिर्फ 5% चांस है इसके बचने के लिए। सो मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि हम इतने खुश होके आए थे बेबी को लेने, और अचानक से ये सब हो जाता है तो कोई हैंडल नहीं कर पाता कि क्या हो गया है। पर मैं जब मैंने डिलीवरी की तो बेबी आया, मैं जब सिर्फ लाइक मैं 2 मिनट भी नहीं बोल सकती, मैंने सिर्फ उसको देखा, सिद्धार्थ ने बोला कि लुक आवर बेबी, एंड एंड आई जस्ट लाइक मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, मैं बेहोश हो रही थी। एंड देन ये सब हैवी ब्लीडिंग हो गया। मेरा हार्ट बंद हो गया, माय हार्ट स्टॉप लाइक ऑलमोस्ट 90 मिनट्स। सो जो हमारी डॉक्टर थी सुचि देसाई, उसने आके बोला कि इसका कोई चांस नहीं है बचने के लिए, हम वेंटिलेटर पर रख देते हैं। आप लोग देख लीजिए लास्ट टाइम। पर वहाँ एक और डॉक्टर थी, उसने बोला कि नहीं, हम ट्राई करेंगे, अभी 5% भी चांस है तो हम ट्राई करेंगे, सीपीआर करेंगे। तो उन लोगों ने 90 मिनट्स तक सीपीआर किया, और मेरा हार्ट तो स्टार्ट हो गया, पर मैं कोमा में चली गई, और मैं ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज मैं कोमा में थी। तब मेरी फैमिली को ये भी पता नहीं था कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी।
और मेरी फैमिली को ये बोल रहे थे कि ये सब मेडिसिन की वजह से गैंग्रीन हो रहा है और इसकी सर्जरी भी करनी पड़ेगी, पर सब वेट कर रहे थे कि मैं कोमा में से बाहर आऊं, क्योंकि अगर मैं कोमा में रहती हूँ तो सर्जरी करने के लिए कुछ बेनिफिट नहीं है बचाने के लिए। पर मैं जब कोमा में से बाहर आई तो स्पेशली सिद्धार्थ के लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उससे मुझे बताना था लाइक मैं अब मेरे हाथ और पैर नहीं रहेंगे ऐसा। तो पर जब मैं कोमा में से बाहर आई, मैंने अपना हाथ देखा। लिटिल बिट आई एम ऑल्सो शॉक बिकॉज लाइक मैं जब सोई तो मैं डिफरेंट दिन था। मैं जब उठी तो मुझे डिफरेंट डेट दिख रही थी। तो मैं भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि क्या हो गया, मैं अभी तो सोई थी और ऐसा ही लगा कि मैं सो के उठी हूँ, पर इतना कुछ हो गया है वो मुझे पता भी नहीं था। तो सिद्धार्थ ने मैंने अपना जब हाथ देखा तो मैंने बहुत मैं रिलैक्स थी, पता नहीं तब मुझ में कहाँ से इतनी शक्ति आ गई, इतनी हिम्मत आ गई। और मैंने सिद्धार्थ को बोला कि ये मेरा राइट हैंड मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये बचेगा नहीं, तो शायद इसको तो निकालना पड़ेगा हमें। तब सिद्धार्थ को भी इतनी हिम्मत आई और हमारी जो फैमिली थी अ, उसमें भी हिम्मत आ गई कि धरा बहुत शांत, सब कुछ इतनी रिलैक्स होके सब कुछ बोल रही है, तो उन लोगों की भी बोलते हैं ना जान में जान आ गई। कि हमारे फ्रेंड्स थे वो भी लाइक बोल रहे थे कि कैसे धरा को सब कुछ बताए। तो पर धीरे धीरे मेरी सब सर्जरी हुई, क्योंकि गैंग्रीन हो चुका था तो सब निकालना था। तो हम थोड़े थोड़े दिन के बाद थोड़ी थोड़ी सर्जरी होती थी और हैवी मेडिसिन्स बिकॉज लाइक इट्स डिफरेंट पेन। सो वो लोग पेन को हैंडल करने के लिए मेडिसिन्स देते थे। इट्स लाइक सिमिलर लाइक ड्रग्स बिकॉज इट्स हैवी पेन and and then my little bit guts problem start, and then colonoscopy and like कहते हैं ना कि जो कुछ भी हो सकता था बॉडी में सब कुछ हुआ है। पर मैं बस जो सिचुएशन आ रही थी मैं इजीली हैंडल कर रही थी उसको। और मैंने यही सोचा कि अगर ये सब होने के बावजूद मुझे भगवान ने बचाया है तो रोने के लिए तो नहीं बचाया है, कुछ तो करने के लिए बचाया है, तो मुझे खड़ा तो होना है। पर ये सिचुएशन में भी जब सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि लाइक हमारे बच्चे माहिर को जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको लैक्टिक एसिड का प्रॉब्लम है। तो अब वो सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी टफ थी। मैं थोड़ी शॉक हो गई थी, क्योंकि हम लोग ये सिचुएशन मेरी खुद की सिचुएशन हैंडल कर रहे थे और एक सिचुएशन को हैंडल करना था। पर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा बच्चा लड़ रहा है तो मुझे तो लड़ना ही है उसे देखकर। और एंड देन हम लोग 4.5 months तक हॉस्पिटल में थे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, पर सब फैमिली थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली का सपोर्ट था, एंड स्पेशली यस सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का सपोर्ट था। इसीलिए मैं इतनी स्ट्रांग बनी, क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रांग थी, फिजिकली नहीं थी, पर फिजिकली सिद्धार्थ मेरे साथ थे। तो बस इस तरह से हम 4.5 months के बाद घर पर आए। एंड घर पर आके हमने ये नहीं सोचा कि माहिर को क्या प्रॉब्लम है, और इन दौरान उसको 3-4 बार हॉस्पिटलाइज भी किया गया। और वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत टफ थी, मुझे रोना भी आता था। मैं अपना सब कुछ भूल गई थी, पर मैं जब उसको देखती थी, उसको सुई लगती है, उसको इंजेक्शन लगते हैं, तो वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत टफ थी। पर
अ, अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी तो फिर मेरी पूरी फैमिली कमज़ोर पड़ जाएगी। तो मुझे मेरे फैमिली के लिए और स्पेशली मेरे बच्चे के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही था। और हम लोग ये भूल गए कि माहिर को जो बीमारी है पर हमें उसको हँसाना है, उसके साथ खेलना है। हमारे पास जो टाइम है, हमें बस वो एन्जॉय करना है माहिर के साथ। हाँ, थोड़ा टाइम था पर भगवान ने हमें जो दिया है, हमें वो स्पेशल बनाना था। तो मैं एक-एक लाइक एक-एक मोमेंट मैं कैप्चर करती थी अपने फ़ोन में। अगर वो खेलता था तो उसका भी वीडियो, जो भी करता था मैं उसका वीडियोज़। आप देखें तो मेरा पूरा फ़ोन माहिर के मूवमेंट से भरा हुआ है। पर यस कभी-कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा ही टाइम मैं रह पाई क्योंकि मैं 4 एंड हाफ मंथ्स तक हॉस्पिटल में थी एंड देन घर पे आके पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। मैं बस क्योंकि भगवान सभी को 2 चांस नहीं देते। अगर मुझे दिया है तो शायद मैं स्पेशल हूँ। इसीलिए मैंने सिद्धार्थ के लिए भी ये सिचुएशन तब टफ हुआ कि हम ये सर्जरी कर रहे हैं, पर क्या ये सब सर्जरी करने के बाद ये लाइफ अच्छी रहेगी हमारी? क्योंकि बिना पैर, हाथ कोई किसी ने भी सोचा नहीं होता। पर बस जो सिचुएशन आ रही थी हम हैंडल कर पा रहे थे और इस तरह से मेरी पूरी जर्नी हो गई और घर पे आने के बाद भी मेरी जो आउट पेशेंट रिहैब थी, यहाँ पे हम बेलर प्लेनो में जाते थे, वहाँ मेरी थेरापिस्ट थी, वो भी बहुत अच्छी थी और मुझे एनकरेज भी बहुत करती थी। तो धीरे-धीरे हमने स्टार्ट किया ये सब। बीच में एक वो भी आ गया कि 19th दिसंबर को वो माहिर का लास्ट डे हो गया। पर वो दिन भी थोड़ा दुःख हुआ, पर फिर मैंने वो भी सोचा कि वो भी इतना पेन से निकल कर गया है और तो वो मैं ऐसे ही नहीं जाने दूँगी। मैं और भी हिम्मत दिखाऊँगी और मेरे जस्ट लाइक 10th मंथ ओल्ड बेबी सो वो इतना वो लड़ा 3-4 बार हॉस्पिटलाइज़ तो बस वो कुछ मैं बस हँसती रहती हूँ, मुझे माहिर में से हिम्मत मिलती है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड्स है, सिद्धार्थ है, तो मेरी जर्नी ऐसे ही चल रही थी और आगे भी बस हँसती रहती हूँ, तो मेरा यही है कि मैं सबको तब और खुश भी कर शायद पाऊँ। फाइट करना बाकी था, तो मेरे हस्बैंड Dhara, go ahead, please. I just want to show pictures of Mahir while you're speaking. Go ahead. यस। Such a cute baby, precious baby. यस हम लोग तब लड़ते थे। मैं बोलती थी माहिर मेरे जैसा दिखता है, सिद्धार्थ बोलता था माहिर मेरे जैसे दिखता है। अ, उसे बाहर जाना अच्छा लगता था, उसे चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी हम लोगों ने टेस्ट करवाया था तो उसे वो भी बहुत अच्छा लगता था। तो आज के दिन भी मैं जब उसका बर्थडे आता है तो मैं दुखी नहीं होती कि माहिर का बर्थडे आया है। मैं खुश होती हूँ कि हाँ, वो ये दिन था कि जब मैं माँ बनी और माहिर आया था, तो मैं उस दिन भी खुश होती हूँ। क्योंकि दुखी होने से कुछ नहीं मिलता और ऐसे बैठने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बस जो हमारे सामने सिचुएशन आती है, हमें वो हैंडल तो करनी ही है। That's amazing. Amazing. Every word that you say is just incredible. I'm just showing some pictures and videos while you're speaking, Dhara. And I tell you that you mentioned Siddharth, your husband Siddharth, a few times. You mentioned your baby, and all that you've gone through is not just one or two fights, multiple challenges, multiple fights, and you have won them all. That's amazing. It's incredible.
I think anyone that is watching is feeling the same right now. Is to Dhara is just a superwoman, you know. No, honestly, the super you are the superhero. The all the fantasy world superheroes are nothing compared to what you've gone through and what you have won here, battles of life. So Dhara, now I we are all eager to meet Siddharth. If Siddharth is around, we have heard so many great things about him. So would it be possible for Siddharth to join us as well? Sure, sure. Thank you, Dhara. Hello, Siddharth. How are Hello, you? Vidya. Good morning, viewers. Good morning. How are you doing, I'm Siddharth? good. I'm good. How are you? Good, good. Thank you. So I don't know who to call the better half because both of you are the best. I mean, there is no such thing as a better half when it comes to you because you are both amazing, wonderful people. I mean, the way you are supporting each other in this journey, Siddharth, the way you have become her rock, and the way Dhara, you have shown that determination to fight and your willpower. I think you guys are like an exemplary couple for everybody, I should say. Thank you. Thank you, thank you. So, Siddharth, please, if you don't mind, sharing a little bit from your perspective about what all Dhara went through. We all watched the video, so we know that she went through a lot of challenges after the birth of her baby. Mm, And even being alive is a miracle today, that she's alive. It's a miracle when there was only 5% chance of her mm, being surviving, and you had almost there was a point, I believe, when the doctor said you just have to see her one last time. And this, just having her here sitting in front of us, and we are not seeing your whole body, but you are as normal as anybody else right now, Dhara. For us, when we are seeing you're alive, you're smiling, you look happy, so this itself is such a miracle. So please, Siddharth, if you don't mind sharing a little bit about what you have seen in Dhara that you admire the most throughout the journey. sure. Yeah. So, I would start with our, pregnancy itself, right? So, when, we were going for a regular, OB checkup at Dr. Shruti Desai's clinic or, lab, and when she had the blood work, she was, I mean, even with the blood work, she has a tears in her eyes, many times. I mean, so we thought that, I mean, she was not this strong at all, on that period of time. But then when all of this happened, she become like the, powerhouse for all the family and friends. um, because, if she would have broken down, there would be nobody can, I mean, get her up, because the challenges she had, losing both the leg, right hand below elbow, left hand no fingers, half thumb, uterus, ovaries, multiple, surgeries, skin grafting, complications. You know I mean, it like, so, like, we everybody heard that, like, we have some inner power, inner strength. But for her, we saw it when, she had this challenge. uh, she took it very, with courage and strength. And the biggest part is the acceptance. If she could not accept what was happening to her, um, and if she would be asking, keep asking question like, why me? Or, thousands of women deliver baby, why me only in this situation? Because we never had, like, we never knew, um, or nobody told us, like, we had like a very major complication or anything before, um, during the pregnancy. So this was a, uh, upside down. I mean, but the way she handled it, the inner strength she had shown to us, it all give us the strength, and we tried our best to support her. And if she has the zest to, for the life, we cannot give up. So we give our best. We try whatever we can do to support her.
and I think we will continue to do that. Beautifully said, Siddharth. Beautifully said. I mean, you know how we hear many times when there is a marriage happening, especially being on the Western, in the Western world, death do us apart. And you guys are actually living that life, you know. You are not giving up on Dhara, and Dhara is not giving up on life. And both of you are made for each other. I don't think anybody else would be able to support Dhara the way you are supporting. And I don't think, I personally feel that there is no other woman who can be as strong as Dhara is. There is not one or two things that we can mention, hey, this went wrong or this went wrong. As she herself said, everything that you could think of that could go wrong probably went wrong, you know. Right. Yeah, so I mean, I really don't have any words to express how I'm feeling right now, just hearing about this journey and how you are sharing about your thoughts, and the way Dhara mentioned that she could not give up because she was a mother. You know, at that point, she had to continue to be there for her baby, and she made the most of those 10 months. And also, even those 10 months, God had taken away 4.5 months from her of motherhood. So she literally spent only a few months with her baby, made the most of it. And such a beautiful baby. Once a parent, you're always parents. So baby is always with you guys. You know, Mahir is always with you guys. I know he's watching over you, he's smiling, and you guys gave the best life that he could get, despite the problems that he was struggling with at that point. And as you said, Dhara, this is just every word, every sentence you've shared with us is so inspiring. I should say that, Dhara, very inspiring. I mean, the way you said that since baby was so little and he was fighting for life, you know, I could do that, right? That kind of confidence you were getting from him. And also, you said, if I lost hopes and lost the confidence, then who will give that strength to the family, right? So you are thinking about all the perspectives. So that is just incredible. We are continuing to receive a lot of messages that I have been trying to share on the screen. Well, here is one. They say you are the cutest couple. Thank you. You have taught us not to give up, so that is wonderful. And I know there are many more. See, there's Siddharth. People are already saying you're a wonderful husband. Thank you. As I said, I mean, you both of you are exemplary. You are role models. And the other aspect that you mentioned, Dhara, that you got a second chance in life and not many get, that is so deep, so profound. And just you being able to think from those angles and living life the way you are itself is just extraordinary, I tell you, Dhara. So you know, you say that you, since you got a second chance, you feel there is more to your life, right? There is Yes. a purpose why you are alive. That is really, I mean, golden words there. So at this point, we would like to share with the audience members that we are also very happy that Dhara's parents and Siddharth's parents are with us today on the program. So we would like to invite Mr. and Mrs. Mehta and Mr. and Mrs. Shah to our program today. They are joining us from India. Namaste, Auntie Uncle. Namaste. How are you? Fine. We are well. Audience members, we will be partly talking in Hindi at this point, but you know, at some point, we would love to give English captions to this program. That way, you're all able to watch it once again after the interview is over. So, welcome to our program, Mr. and Mrs. Shah, Mr. and Mrs. Mehta. Welcome to our program. How are you doing? Fine. Wonderful to have you. So, Mr. and Mrs. Mehta are Dhara's parents here, and Mr. and Mrs. Shah are Dhara's in laws. So, let us begin by talking to Dhara's parents. Would you please
help us? थोड़ा बहुत अपना हमको बताइए. How was Dhara when she was a child? Was she a naughty child? आपको क्या याद है उसके childhood? उसके बारे में सोचते हैं तो आपको, if you would like to share something with us, so our audience knows more about Dhara. कैसी बच्ची थी? जरा जरा बचपन से ही बहुत समझदार लड़की है। और जब वो 1.5 साल की हुई तब हमारी दूसरी लड़की का जन्म हुआ। तो अब तभी से वो बड़ी बहन बन गई और तभी से वो बड़ी बेटी और बड़ी बहन का कर्तव्य निभा रही है। तो तेरा बचपन से ही बहुत एकदम नटखट और बहुत अच्छी सी था, सब में मिलजुल जाती थी। और जब बड़े 22 साल की थी तब उसकी शादी हो गई और वो यूएस चली गई। बाद में वहां जाके भी बहुत अच्छे से सब में मिल गई, सबके साथ एकदम। वापस हम फोन करते तो कि नहीं मम्मी कुछ हमारी चिंता मत कीजिए कि हम बहुत अच्छी है कि यहाँ सब कुछ है, सीधा भी हमारा ख्याल बहुत रख रहे हैं कि कोई चिंता मत करो के। और बाद में हमने भी बुलाया वहाँ घूमने के लिए, जब वो प्रेग्नेंट थी तब हमने बुलाया, हम भी गए वहाँ घूमने और अच्छे से हमने घुमाया, सब जगह बहुत अच्छे से घुमाया। और जाके जब उसकी डिलीवरी हुई तब हमें बहुत हो गए थे इनके इसके जो प्रॉब्लम हुआ, तब हमारे बहुत हम हो गए थे कि क्या हुआ है धरा के साथ। जब हमें देखा तो हमें ऐसा सोचा कि अब भाई वो क्या करेगी, कैसे करेगी, सब पूछे में इसे हमें सब बहुत हो गए थे। और ये धरा के साथ ये घटना हुई, बाद में हमें तो लगता था कि वही उसकी लाइफ व्हीलचेयर में ही रहेगी, लेकिन धरा का आत्मविश्वास और सिद्धार्थ का सपोर्ट और उनका फैमिली का सपोर्ट के वजह से वो आज एकदम नॉर्मल बन गई है। और उसका आत्मविश्वास देखकर हमें भी आज बहुत खुशी हो रही है। मैं जब वहां थी तो मैंने सब कुछ देखा कि कैसे हुआ, कैसे करेगी, सब कुछ कैसे उठ पाएगी। पर जब वो उसका माइंड एकदम फुल हुआ तो उसने वो देखा हमने कि नहीं वो स्ट्रांग हो रही है, तो हमने भी उसके साथ सब कुछ मैं और सिद्धार्थ करने लगा, नहीं वो स्ट्रांग है तो ये सब कुछ कर रही है तो हमें भी सपोर्ट करके हम भी उसके साथ सब कुछ करने लगा कि ना हम भी उसको मेहनत करना चाहिए उसके साथ। तो हम सब बहुत मेहनत करके उसके देखा और करने लगा और वो एकदम स्ट्रांग होकर सब कुछ कर रही थी। तो सिद्धार्थ ने भी उसका बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और ये सब कुछ अभी जो कर रही है ये सब उसका स्ट्रांग होने के बाद ना हम भी देख रहे कि नहीं वो स्ट्रांग हो गई। और अभी मेरी छोटी बच्ची की शादी थी तब यहाँ आई 3 महीने पहले, तो हमने सब कुछ देखा और समझे कि ना अब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो हमने भी ऐसा नहीं, हाँ बरोबर हमारी बेटी अब सब कुछ कर सकती है। मैम This is a very emotional moment for your mother and father, Dhara. We can tell that. It is very emotional. But see, Dhara, um, we are seeing where you get that beautiful smile from, right? Auntie yeah. has the same beautiful face and smile. So your mother and you are just like आपकी बेटी बिल्कुल आपकी छवि है आंटी, बिल्कुल। तो Yeah. और Dhara, the way your mother, अच्छा, yeah, auntie. मेरी कार्बन कॉपी है। So Dhara, it's the same sentiment that your mother shared, that because you were so strong that they were able to, Siddharth and auntie were able to take good care of you, they were able to put extra efforts. So all the credit really goes to you, Dhara. So you have to be proud of all the, fight that you put up in life and you Yeah. came victorious. And as everybody is saying, the way you are how we perceive that you are living a normal life is not at all close to the Yeah. normal life rest of us live, but you are showing that this is a perfectly normal life I am able to manage. So hats off to you, dear, hats off to you. Thank you. And we are
And also, auntie, uncle, I have to mention, बताना है मुझे कि this name धरा is perfect. आपने बहुत ही एकदम सही नाम चुना है धरा के लिए. वो जो धरा धरती में शक्ति होती है सबको Yeah. संभालने, वही है उसमें. मुझे वही लगता है कि उसका नाम भी बहुत ही बढ़िया चुना है आपने. एकदम उसकी पर्सनालिटी करता है. She is very strong. Actually, we are also getting a message here that one of our viewers is also Yeah. mentioning the name. That suits you. Abhi, let us go to Siddharth's parents here. Thank you for waiting patiently, uncle, auntie. Thank you for being on the show with us. Thank you. आप प्लीज रहिए हमारे साथ. शाह अंकल आंटी, आप थोड़ा सा, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग अ लिटिल बिट मोर अबाउट व्हाट यू हैव सीन धरा एज. हम और मेहता फैमिली है बहुत वर्षों से एक दूसरे से पहचानते थे. जब धरा 11 साल की थी तब से हम लोग एक दूसरे को पहचानते थे. और सिद्धार्थ और धरा का तो अरेंज मैरिज था, कुछ लव मैरिज नहीं था. लेकिन इस दोनों का नेचर इतना इमोशनल है कि जो भी परिस्थिति आती है इसमें वो बहुत आगे का देखते हैं. कुछ पीछे का कैसे होगा ना ऐसा नहीं सोचते, आगे का ही सोचते थे. और इसका दोनों का नेचर ऐसा है कि दोनों कभी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते और कंप्लेन नहीं करते किसी की. अपने अपने हिसाब से ही वो लड़ते रहे और आगे का सोचते रहे. एंड दे नेवर क्राई कि ये ऐसा हुआ कि हम कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलते. That is amazing. That is amazing, uncle. And you are welcome to speak in English because you know you are able to speak in English. Please, yeah. Right. No, this is wonderful that I think both their personalities are that way, that they don't cry about what has gone wrong, but they are able to face these situations. Yeah. So please continue. And due to their confidence, they have empowered both family, and we can stand up. But it is very difficult to handle this situation. But due to confidence and their patience are main thing that they empower us. Thank you for sharing this, uncle. Auntie, please, yes, please बताइए. हाँ, धरा जब शादी करके आई हमारी फैमिली में तो हम बहुत खुश थे. वो ऐसे मिलजुल गए हमारा फैमिली में. वो कहती थी कि ये मेरा ससुर नहीं, मेरा पियर ही है, ऐसा उसको लगता था. बहुत छोटी उम्र में उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ. हम सब टूट चुके थे. हम उसकी परिस्थिति देखकर हमको मालूम नहीं था आगे क्या होगा, हम कैसे ये सब मैनेज कर सकेंगे, कैसे दोनों बच्चों को हम संभाल सकेंगे. लेकिन धरा ने जो हिम्मत दिखाई, जो स्ट्रांगनेस दिखाई, वो बहुत 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 हम सैल्यूट करने वाली बात है. वो जब भी मुझे मिलती है तो मुझे सर झुकाकर प्रणाम करते है. लेकिन आज मुझे कहना पड़ता है कि उसकी हिम्मत, उसकी स्ट्रांगनेस और उसका विल पावर ऐसा है, ये देखकर हमारा हम सबका सर झुक जाता है. ऐसे हमारी धरा आज ये क्रिटिकल पोजीशन से बहुत मेहनत करके ये इस जगह पर पहुंची है. और ये अब अपनी नेचुरल लाइफ जी सकती है. और हम सबको बहुत संतोष है, बहुत आनंद है कि ये दोनों बच्चे हमारे खुशी रहते हैं और खुशी एंजॉय करते हैं.
आंटी अंकल आपका सुन के बहुत खुशी हो रही है बात। आपने सही बोला, यू सेड इट राइटली दैट धरा इज अ पर्सन हु वी ऑल हैव टू बाउ टू, salute to her, hats off to her, and to both parents really, Siddharth's parents and Dhara's parents. I think you have put in that kind of a value system in them as they were growing up, so that shows in how they are handling life now, how they are managing life. So we can tell just talking to you also what strong personalities and very cultured families that you all belong to. I think this is such an exemplary family itself, for especially coming from an Indian society where unfortunately many times we kind of like give focus or importance on very unimportant points, I should say, rather than going deeply into what all I mean. But what we are really supposed to be doing is supporting each other, ladki ho ya ladka ho, whether it's a girl or a boy. Support them throughout life, accept them the way they are, and help them live the life that they dream of. And I think as parents you are doing the best that you can for Siddharth and Dhara, and Dhara and Siddharth as their children, and the way you are facing life and enjoying life, as they said, it fills them with joy also. So you are on mute, Siddharth. So, yes, please go ahead. What to add here? So you mentioned about the support of the family, right? So when this happened, Dara's parents were here, and her mom and dad, they were like, very strong pillar. They were with me in the hospital, most of the time, with supporting her. At the same time, I have this infant in my hand, and we need to take care of him. So my parents immediately, as soon as they could come, they came. They took care of this my newborn baby. And that how hard it is to take care of the newborn baby, especially for my parents. I mean, they were just doing that. They were not looking at like day or night, because babies wake up. I mean, so both of this family, they supported us like commendably. I mean, without family support, without our friend support, this would not have, it will be like really tough fight for us. But thanks to my, both families, my friends, so just, yeah, I just want to add this. Definitely, Siddharth, definitely. I think there were two babies to be taken care of at that point, right? Mahir and Dhara. So Dhara's parents were तब मैं वही बोलती थी कि मैं और माहिर साथ में चलना शुरू करेंगे. that is true. That is true. Well, Dhara, again, I mean, the more we get into your journey, the more unbelievable we feel that this is all like, it is not short of any miracle that you're living right now. It indeed is one. And we just appreciate you taking, bringing your story to us, right? You started your YouTube channel and you started showing your journey, your day to day routine. So I would like to mention at this point to all our viewers, and please do go to Dhara's YouTube channel. It is called Dhara's Wonder Life. I am going to also put it in the comment for all of you. So please do watch all her videos. It is wonderful. And who would not want to watch this beautiful person with a smile? It's like you are saying, hey life, bring on any challenge, I can take it. That is how you are, Dhara. So I just shared the channel here with everybody in the comments. So Dhara's Wonder Life, that is on YouTube. Please do subscribe to her. Don't just watch, like and comment. That is something that we tend to forget. We watch and we move on. But please do like and comment. Dhara takes time to reply to comments. I have seen that. She's enjoying everything that she does. यस, बिकॉज ये भी मेरे लिए एक डिफरेंट जर्नी है. मैं यूट्यूब में
वी जस्ट थॉट लाइक हम किसी को हिम्मत दे सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, एंड दैट टाइम वी जस्ट थॉट वी स्टार्ट यूट्यूब चैनल. Wonderful. Yes. So, Dhara, once again, I would like to thank both Mr. and Mrs. Mehta and Mr. and Mrs. Shah. Thank you so much for joining our program today. We appreciate the amazing support system that you have provided to Dhara and Siddharth. Because now, for parents, they just want to see, all parents just want to see their children happy, and you had to do so much more than any parents would normally have to do. So hats off to you, salute to you also. And Dhara, of course, no words can ever say how impressed, how proud, and how grateful we are for the life that you are living now, despite going through everything that you, the way you have taken on the challenges and you're facing life. Dhara, I would like to ask you as a parting question, any message that you would like to share with our audience members? And as I had mentioned to you before, you are not just a role model for women out there, for all human beings, men and women, both Siddharth and you, and especially you, Dhara. So if you have any message for our Sure. audience. यस. सो जब लाइक मेरे साथ ये सब हुआ तो सिद्धार्थ ने बताया कि पहले मैं बहुत डरती थी सभी चीज़ों से, और मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं खुद नहीं जानती थी. तो हमारे अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, हमें उसको पहचानना है, और जो भी सिचुएशन आए बस उसके लड़ो, हैंडल करो उसे, उसे मत भागो. अगर भागोगे तो वापस से वो आ जाएगा, पर हमें जो सिचुएशन आ रही है उससे लड़ना है. और सभी के अंदर बहुत हिम्मत है, बस उसको पहचानने की देरी है. तो बस यही है कि आप आपके अंदर जो है हिम्मत, उसे पहचानिए, और फैमिली का सपोर्ट है तो आप मत डरिए किसी चीज से. Wonderful. Siddharth, would you like to add something? Or even if you want to translate what she said in English, that's absolutely fine. So please, Siddharth, we would like to give you an opportunity as well. Sure. I mean, I think the her biggest strength is she never lose hope and she never lose courage in whatever situation we were. I mean, it was heartbreaking in all the possible ways you can think, but the hope and the courage, if you lose any of that, then it will be hard to stand up even with the feet. So she has to stand up without the feet, but this is her biggest strength. So yeah, you should know your inner strength. It's in everybody. It's just that we need to know and we need to be familiar and aware about it. So just live the life fullest. Yep. And this is just one life, so enjoy every moment. Yeah. Oh my God, Dhara, I have no words to say how incredibly inspiring you are. I feel blessed to have you as my guest today for the program. So I don't feel like letting you go, honestly. I would like to talk to you more, but now that I know that you love mangoes, maybe Yeah. during mango season we'll meet up and eat mangoes together. Okay? I love mangoes too. Sure. All right. Thank you once again for joining today. All our viewers, please do go to Dhara's YouTube channel, which is called Dhara's Wonder Life. And please do take some time to watch this video once again after the interview is over. And do share your comments there with us and with Dhara. And we would like to see you again the next time, the next program that we have, which is the last Saturday of every month. We have our English interview program, and the first Saturday of every month you'll have my Kannada program. So we would like to encourage you to watch and tune in once again. And I would like to at this point give a shout out to Facebook group Brown Mommies Unite. That is where Dhara's story was shared,
And that is how I came to know about Dhara. So all the mommies out there, all the women out there, Facebook groups who are on other social groups who are working on a common purpose and spreading positivity, please do keep spreading such stories and positivity with everyone. Thank you so much, Dhara, once again. Yes, and Thank I you. just like thank you, Vijaya. So it's like big opportunity for me. So thank you so much. It's such a pleasure to have you, dear. So happy to have you here. And just knowing you, because even our audience members, some of them said, we just know Dhara for 45 minutes, but we feel like we know you forever, right? So Thank you, everyone. Thank you so much. thank you again. More power to you, Dhara. Best wishes to both of you, Dhara and Siddharth. आपकी जोड़ी बरकरार रहे, खुश रहो आप, और हम ऐसे ही आपको देखते रहें खुशी से. And we will be watching you on your videos, so please don't stop that. Sure, So sure. both of Thank you, you. and auntie, uncle, both sides, Mr. and Mrs. Shah, Mr. and Mrs. Mehta, thank you so much. Thank you. Thank you. Your blessings are important for everybody, not just Dhara, Siddharth. You are doing such incredible parents. Thank you so much for all that you do. Thank you. Thank Namaste. Thank you. Thank you. Thank you. Namaste. All right, everybody. We'll see you next time. All right, everybody. We'll see you next time. Meanwhile, as Dhara said, it's just one life. Enjoy it, make the most of it. And next time we feel like complaining about something in our life or about somebody or something that's not working out, right? Let us think about Dhara. Take a moment to think about Dhara, and let's be on our best self, and let us do the best that we can and just spread happiness and joy and positivity. Thank you once again for tuning in today. We will see you next time. Meanwhile, you can connect with me by connecting with me on social media. Stay tuned with Vijaya on Facebook page. Send me recommendations for more guests. I'll be very happy to invite them for my program. And also, please do share with us how you find our programs. Thank you once again. See you next time. Namaste. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत.